First part है express 1050 as the product of, so we need to do prime factorization of 1050. And then they are asking a similar question to question 11. They are asking you find the two numbers both greater than 40, ठीक है, that have HCF 21 and LCM 1050. ये बिल्कुल ऐसे ही question है, ठीक है. So let's solve question number 12. I will share all these solutions, okay, so that you can do it on your notebook. So beta, you need to do these questions in the first term of class 7. So please make a rough copy or register जिस पे ये सारे questions तरतीब में करते जाएं, ठीक है. Especially मोईद, आप बहुत रफ काम करते हैं मोईद, एक कॉपी पे ये सारे questions, because tomorrow is off day, so you can do that, ठीक है. एक्सरसाइज का नाम लिख के ये questions अपने पास रिकॉर्ड करते जाएं, ताकि जब आप काम करेंगे तो जब आप स्कूल में पढ़ेंगे ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक्स, तो आपके पास ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन और सारी वर्कशीट्स के क्वेश्चन हो, ठीक है. 1050 की फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन 1050. सो विद व्हिच नंबर वी कैन डिवाइड, किससे डिवाइड करें, अब्रिश एंड मोहित, किस नंबर से डिवाइड करें? मैम 2 विद 2, ठीक है. 2 5s are 10, 2 25 20. वी कैन डिवाइड विद 3, ठीक है. 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है अब्रिश और मोहित? यू नीड टू ऐड द नंबर्स, इन नंबर्स को ऐड करें तो 12 आता है, ठीक है. सो इट इज डिविजिबल बाय 3. 3 1s are 3, 22, so 3 7s are 21 and 3 5s are 15. So now I cannot divide because the sum is 13, ठीक है. So I can divide with 5, ठीक है. 5 3s are 15, 5 5s are 25. I can again divide with 5, 5 7s are 35 and 7 1s are 7. So first part is done. We need to write it down as a prime factors, 5 square into 7, ठीक है. Now moving on to second part. अच्छा, अब second part में they are asking us to find two numbers, वही A and B we will call them, कि उनका, अच्छा, find two numbers less than 40, नहीं क्या था, find two numbers greater than 40, जैसे पिछले क्वेश्चन में they said HCF से बड़ा. So now the condition is find two numbers greater than 40, ठीक है. वो numbers 40 से छोटे ना हो, और उनका LCM और HCF क्या given है? LCM तो यही given है 1050, और HCF is given as 21. उनका HCF 21 है और उनका LCM 1050 है. अच्छा, now we can just solve it. हमने पहले ही प्राइम फैक्टराइजेशन की हुई है इसकी, so we can just say LCM is 2 into 3 into 5 square into 7, ठीक है. And HCF is 21 can be written as 3 into 7, ठीक है बेटे. So now we need to see what are the two numbers A and B, ठीक है. So 3 और 7 देखें दोनों में है, इसका मतलब क्या है, 3 और 7 आपके क्या थे, कॉमन फैक्टर थे, कॉमन फैक्टर थे. तो इसका मतलब है you will write down 3 and 7 in A as well as in B in both, ठीक है. 3 and 7 will come in both. So now comes 2 and 5 square. अब देखो आपने, अगर that's right, you will assign 2 to one number and 5 square to the other number maybe, क्योंकि अगर आप 5 square को डिवाइड करेंगे तो that will become a common factor. कॉमन फैक्टर तो आपने नहीं बनाना. अच्छा, आप देखें, अब 40 से बड़ा होना चाहिए. Let's see if it is bigger than 40. 7 3s are 21, so 21 को डबल करें तो it's 42. This is close to 40, and this is 7 3s are 21, and 21 into 25 is 21 into 25. 525. 525, ठीक है. So these are the two numbers, ठीक है बेटे. So then we will say hence the two numbers are, मोहित ये बात समझ आ रही है बेटे, ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं आज वाले, ये every question is like we have done almost 3 or 4 types of question. The two numbers are 42 and 525, ठीक है. So ये आपके पास इसका आंसर. Having 3 numbers जिनका HCF, क्योंकि होमवर्क में I will give you those numbers also. अगर आपने 3 numbers का HCF लेना हो, for example आपको कोई कहे कि find HCF of, let's say HCF of, let's say 10 12 and 36. So how you are going to do that? कैसे करते हैं? Ma'am, we will do, let's say 10 12 and 36. 10 12 and 36. We will First multiply all, them. We will divide them with divide 2. So 2 5s are 10, then 2 5, 6 are 12, 6 and 16, 18. 18, ठीक है. This is not the common factor. HCF में ये blue ही होगा HCF, ठीक है. HCF वही होगा जो तीनों से डिविजिबल है, लेकिन LCM में
अगर आप ये मिस्टेक करेंगे तो फिर आपका एलसीएम गलत आ जाएगा। एलसीएम में कॉमन फैक्टर क्या होगा? आपसे पहले हम कह रहे थे जो कॉमन फैक्टर है वो एचसीएफ होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इन 3 नंबर्स में दिस इज अ डिफरेंट मेथड। कॉमन फैक्टर इज 2 into 2 into 3। अब देखो यहाँ पर 2 नहीं है कॉमन फैक्टर, यहाँ पर ये भी कॉमन फैक्टर्स हैं, ठीक है, और नॉन कॉमन फैक्टर इज 3 into 5। अबरीश ये बात समझ आ रही है? जब 3 नंबर्स का Yes. एचसीएफ निकालते हैं तो आपने एचसीएफ तो उसी तरीके से निकालना है, लेकिन एलसीएम में आपने याद रखना है कि इवन इफ द 2 नंबर्स आर डिविजिबल, सो यू विल टेक देम एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब देखो इसका आंसर क्या आता है? 3 2 6, 6 2 12, मल्टीप्लाई बाय 15। सो 12 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 180। Yes. 180 ना? Yes. 180, ठीक है। व्हेन वी आर टेकिंग एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स, सो एचसीएफ तो बिल्कुल उसी तरह निकालना है जस्ट लाइक वी फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, लेकिन एलसीएम में देयर इज अ चेंज कि एलसीएम में इफ द 2 नंबर्स आर डिविजिबल, सो यू विल स्टिल टेक इट एज अ कॉमन फैक्टर, ठीक है। सो आपके शाह नीड्स टू पैक 171 पेन्स and 63 pencils equally into identical gift bags. We need to find out the largest number of gift bags that can be packed and the number of items. So first of all, you need to tell me that to find the largest number of gift bags, what do we need to do? Logically, do we need to find out HCF or LCM? But please pay attention and tell me. Okay, we need to find out the largest number of gift bags we can From make. LCM. अगर हम LCM लेंगे, so we will get a bigger number than 171. So do you think we can pack more number of bags or the lesser number of bags? Ma'am, lesser. So let's try Lesser. to understand the question again. Question is that Shaha needs to pack 171 pens and 63 pencils equally into gift bags. Okay, so we need to find out how many gift bags she can make. Okay, so do you think the number of gift bags will be smaller than these 2 numbers, or do you think they would be bigger? Like you are having 171 pens and 63 pencils, और आपने gift bags बनाने, goodie bags बनाने. So do you think the number of bags will be less or more? अगर हम LCM लेंगे तो LCM would be a bigger number. So how can we Yes. put 63 pencils in, let's say, 2000 bags? LCM तो इन दोनों का बड़ा होगा ना, like the number would be maybe more than 200. So ऐसे तो नहीं हो सकता ना. So we need to find out HCF, ठीक है? और वैसे भी this is a hint, largest number. So largest mean highest common factor, ठीक है? Factor क्यों? Because हमें एक ऐसा number ढूंढना है जो 171 और 63 को दोनों से divisible है, ठीक है? दोनों उस number से divisible है, right? So we need to find out HCF. So I'm opening the whiteboard. Is it clear why is it HCF, Moeed and Abrish? Yes. Ma'am, I ठीक है? think that both can be divisible on 3. They are both divisible on 3, but we need to find out the largest. इस तरह तो they both are divisible on 1 also. तो हम एक ही बड़ा सा बैग बनाएं और उसी में सब कुछ डाल दें, तो हमने largest number लेना है. हमने वो largest number लेना है with which the 2 numbers are divisible. So 3 can be one option अगर ये ना लिखा होता कि largest number, ठीक है? So we are going to do question number, I don't know which question it was, 13, ठीक है? 3 is the correct answer, but 3 is not the largest number, ठीक है? So we are solving part 1 and we need to find out HCF of 73 and I think so. So Abrish, can you think of a bigger number? 63 and 171. 171? Oh, is it 170? Oh, yes, it is 171. 171 and 63. So we are going to do prime factorization together because it is LCM, HCF. So 171 and 63. With which number I can divide? 3. With 3. Okay. So 3 into 8. No, sorry. 3 5s are 15. Yes. 3 5s are 15. And then 2 remainder hai. So this is 3 7s are 21. Okay, this is simple. 3 2s are 6, 3 1s are 3. So with which number I can still divide? Mueed, 57 and 21. With which number I can still divide? With 3 again. Okay. So this is 3 1s are 3, 27, 3 9s are 27. And this is 3 7s are 21. So these are the common factors, right? So HCF is 9. So 9 bags we can make. Okay. Again, we need to answer the question. Question was find the largest number of bags. So largest number of bags are number of bags are 9. Okay. So now moving on to second part. Now they are asking that we get this point we can make 9 similar bags, identical bags. Now they are asking in one bag how many pencils and how many pens would be there. So if there are 9 bags, so number of
pencils, 171 pens है ना, number of pens in each bag. So how we are going to find out number of pens in each bag? So what to do? मोहित आपकी आवाज नहीं आ रही. Number of pencils in each bag. So how can we find out? जी बेटे, how can we find out? We figure out in first part that the total bags would be 9. ठीक है, they are identical bags, यानी इन सब के अंदर एक जैसी number of pencils और pens हैं. So now we need to find out हर bag में कितने pens होंगे और कितनी pencils होंगी. So what do we need to do? Ma'am, each bag has 19 pens. That's right. So what do we need to do? We need to divide. Total number of pens are 171 and we are dividing them in 9 bags, and total pencils are 63 and we are dividing those pencils in 9 bags. So how many Ma'am, pens? 7 pencils and how many pens? Ma'am, 19 you were saying, 19. right? So now we can answer. These 3 dots means hence. When you conclude something in the question, then you use these 3 dots. So hence each bag contains, okay, each bag contains 19 pens and 7 pencils, right? This is the answer to the question. Okay, whenever we are doing word problems, we always write down the answer according to the question of the word problem. Okay, so any question in this one? Mohit, Abresh, anything you cannot understand? Is this question clear? All right. What about Mohit? Mohit, आपको भी समझ आया? I can understand. Yes. All right. So now let's do the last question of exercise, which is question number 16. So question number 16 is, Ken wishes to cut the biggest possible squares from a rectangular sheet of paper without any leftover paper. ठीक है, Ken is having a rectangular sheet and he wants to cut squares from that rectangular sheet. There should not be any leftover paper. ठीक है, the sheet of paper has a length of 65 centimeter and a breadth of 50 centimeter. What is the length of each square and how many squares he will cut all together? So what do we need to do? हमने इन दोनों का क्या निकालना है? 65 and 50. What do you think? Should we find out HCF or LCM? हमने निकालना है length of each square. Ma'am, in the first we will do HCF, I think. Because HCF. That's right. Because the length of the square would be smaller. ठीक है? So let me make this question number 16. ठीक है? Question number 16. देखो, there is a rectangular sheet. ठीक है? And the length is, for example, 65 and 50. 65 is the length and 50 centimeters is the breadth. So we need to find out, we want to cut, like Ken want to cut this sheet into squares. ठीक है, ऐसे squares बनाने. And he wants के there is no leftover sheet. सारी sheet utilize करते हैं. तो हमने ये find out करना है, what is the length of this square. ठीक है? So we will do, for the first part, we will find out HCF. हम HCF क्यों निकालते हैं? Because HCF of 50 and 65 means the biggest factor, like biggest number which can divide both of them, ठीक है, equally. Like हमने 50 और 65 को equal parts में divide करना. So we will do the prime factorization in a similar way. 50 or 65 की prime factorization with which number I can divide? With? Ma'am, 5. 5. So this is 10 and this is 13. Yes. Can I divide any further? No. No. So HCF is 5. 5 centimeter. ठीक है? So HCF is 5 और इसका क्या मतलब है कि he can cut a square. HCF is 5, so that is the length of each now let's write down each square is 5 centimeters. That's right. What is the length of each square? So you will say hence, or you can use 3 dots like this. Hence the length of each square would be 5 centimeter. Right? 5 centimeter के अगर वो square cut करेगा, so he would be able to cut this rectangular sheet into squares without leaving any leftover paper. ठीक है? अच्छा, now the second question. Now they're asking how many squares he can cut. So there are 2 methods. Can you think of a way? हमें ये पता चल गया है कि इस rectangular sheet में हमने 5 centimeter के length के square काटने हैं. So how can we find out कि कितने squares कटेंगे, मोहित और अब्रेश? Can you think of a way? कैसे पता करें कितने squares कट सकते हैं? What to do? Ma'am, we can divide 5 with Good. with the Can divide. With the 50 and 65. Very good. And then what? 50 और 65 को 5 से divide कर लें and then what? उसको क्या करें दोनों को? दोनों. Like आप ये कह रहे हैं ना, number of squares जो हम काट सकते हैं 50 divided by 5 and 65 divided by 5.
लेकिन इसको फिर करें क्या, इन दोनों को क्या करें? No, ma'am, I mean, we can add 50 and 65 and then divide with 5. We can add them. Are you saying this? We can add. Mohit, do you think this will work? Ma'am, I mean that first we can take the sum of 50 and 65 separately. So why we will add 50 and 65? If we add 50 and 65, so the answer would be, what would be the answer? 115 divided by 5. यहाँ से 23 आता है और यहाँ से भी 23 ही आता है, ठीक है, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज सेम ना, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ट्रू नहीं होगा, ये जो ये वाली बात है ना, this is the right way, ठीक है, divide it, because we need to divide length also into 5 centimeter like हमने length को भी 5 centimeter के parts में divide करना है और width को भी, so we are dividing it and then we are adding, so the answer is 10 plus 13 23, right? So there is one more way, वो हम किसी जगह और भी use करेंगे, there is another way of finding this, let's try that. एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर हम ये सोचें कि what is the area of the rectangle, ठीक है, सो ये तो हमने लेंथ के थ्रू किया ना, एक और मेथड है कि अगर हम कहें व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 65 into 50, राइट, लेंथ into breadth, ठीक है, सो दिस आंसर वुड बी, अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 into 5 25, 6 5s are 30, 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास टोटल एरिया है, एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर्स यू वांट टू कट, सो दैट स्क्वायर इज 5 क्रॉस 5 25 आ जाता है आपके पास, ठीक है, 25 centimeter square. So now you need to find out the number of squares you can cut out of those rectangular sheet. The number of squares would be 3250, the total area, and the area of the square you want to cut. ठीक है, अगर आप इसको डिवाइड करें तो I hope this is the same answer or not. Is it? Yes, ma'am. Is it the same answer, like 25 into same तो नहीं आएगा, और ये आंसर सही लग भी नहीं रहा ना, क्योंकि 10 plus 23 तो आप नहीं कट कर सकते, इसमें कोई इश्यू लग रहा है मुझे, इसका आंसर क्या आता है बेटे, 3250, so if you divide with 25, Ma'am, the answer is 130. 130 आंसर आता है, so this makes sense, this does not make sense, 23, इसको ऐड नहीं करना था ना, मल्टीप्लाई करना था, this was the mistake, ठीक है, ये ऐड नहीं करना, Ma'am, the answer is इसको 130 multiply, now. that's right, और 23 हो नहीं सकते ना actually, why this is not making Yes. sense, because you cannot cut 23, odd number तो नहीं कट कर सकते ना, तो ये आपके पास 230 130 आंसर आता है, ठीक है, ऐड नहीं करना, you need to multiply number of squares, ठीक है, length multiply by width. अच्छा, the second, the one I did with blue color, that is more sensible answer. एक और इस तरह का क्वेश्चन हम Yes. वर्कशीट में अभी करेंगे, this is making more sense, like we have calculated the total area and then we have divided it with the area of that square we need to cut, ठीक है, this is more justified answer and the answer would be 130, ठीक है बेटे. Two is find the least length of a rope which can be cut into the whole number of pieces of length 45 centimeter and 75. So can you explain the question, Abrish or Mohit? Question kya hai? We have two pieces of length 45 and 75. So what do we need to do? Find the least length of a rope. क्या करना है हमने इन दोनों को? Mohit, can you think कि Ma'am, क्या the करना है? LCM. We need We to. will take the LCM of 45 and 75 because the word least is used. We are done figuring it out, so now it is easier. So how can we do? Let's do the prime factorization together. 45 and 75. So with which number we can divide? Mohit? Ma'am, With which number 3. we can? With With 3. 3. So 3 15, 3 2s are 625. Okay, now with which number we can divide? With Ma'am, 5. 5. So 5 3s are 15 and 5. So this is interesting. The common factor is also 15 and the non-common factor is also 15, right? So what is LCM? 15 multiplied by 15. So can you remember what was the square of 15? Ma'am, 225. 225. So अगर हम 225 centimeter की rope लें, so then we can cut it into whole number of pieces. यानी there would not be any left over. ठीक है, हम उसको equal parts में cut कर सकते हैं. हम इसके 45 centimeter के equal parts भी बना सकते हैं और 75 centimeter के भी equal parts बना सकते हैं. So you will say hence the least length of rope is
225 centimeter. Acha, I have a question here, Abrish and Mohit, कि why this word is there least? So can there be other answers? Can there be other answers to this question अगर ये word least ना होता? Do you think there are more answers अगर ये least word यहाँ पर ना होता? तो फिर क्या और answers हो सकते थे? जी बेटे, please unmute your mic, Mohit and Abrish, and tell me this answer. Okay, what if this least word is not there in the question? So then what can be the other answers? Can we have multiple answers then? Or if Yes. yes, तो फिर then what would be the answer? एक तो आंसर हमारे पास फिर 22, 25 ही होता. और क्या आंसर्स हो सकते थे? हम इसके मल्टीपल्स लेते जाते हैं. 225 is the least number. Then if you double it, multiply it with 2, so it would be 450. 450 भी वो ऐसा नंबर है जिसके हम equal parts कर सकते हैं. If you multiply 225 with 3, that will be the third answer, fourth answers, and so on. So there are unlimited answers if this word is not written least length. ठीक है, अगर ये लफ्ज नहीं लिखा होता लीस्ट लेंथ ऑफ रो, तो जैसे एलसीएम इज लाइक अ टाइम टेबल ना, तो टाइम टेबल आपको पता है कभी खत्म नहीं होता. ठीक है, सो यू विल मल्टीप्लाई इट विद 1 विद 2 विद 3 एंड सो ऑन. सो ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 225 आर द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन इफ दिस वर्ड लीस्ट इज नॉट रिटन. ठीक है, इज इट मेकिंग सेंस? ठीक है बेटे. मोहित, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपका कोई मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा बेटे. आर यू देयर? Yes, ma'am. So beta, why you are not answering, Mohit? Are you busy? No. Achha, now the next question. Next question is, find the greatest 4-digit number which is exactly divisible by 40, 48 and 60. So 4-digit number, greatest 4-digit number. So do you think it is HCF or LCM? Greatest 4-digit number. Greatest से आप सोच सकते हैं it is HCF, but it's a 4-digit number. और यहाँ से भी देखें it is divisible by, ठीक है, divisible by 40, 48 and 60. तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो 40 से भी डिविजिबल हो, 48 से भी डिविजिबल हो और 60 से भी डिविजिबल हो. सो दिस इज नॉट द HCF. ग्रेटेस्ट वर्ड से सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, आगे भी देखना है. एक तो 4-digit नंबर है, तो HCF होता तो वो तो 40 से भी छोटा आएगा, तो इट इज नॉट HCF, इट इज LCM. सेकंड रीजन इज द नंबर इज डिविजिबल बाय 40, 48. नंबर इज फुली डिविजिबल. इसका मतलब है दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ दीज थ्री. तो वी नीड टू फाइंड आउट LCM. इज दिस क्लियर? द रीजन व्हाई वी आर गोइंग टू फाइंड आउट LCM. ये चीज समझ आइए? Yes, ma'am. अब्रेश, आपको समझ आइए बेटे? द टू थिंग्स. Yes, ma'am. ग्रेटेस्ट वर्ड इज कंफ्यूजिंग हियर, बट आपने ये देखना आंसर इज अ 4-digit नंबर. तो अगर आप HCF लेते हैं, HCF तो 40 से छोटा आएगा, तो दैट कैन नॉट बी 4-digit नंबर. इसका मतलब आपने LCM लेना है. सेकंडली, it is written, it is exactly divisible by all the three numbers, so it means the number is bigger. तभी तो वो 60 से भी divisible है, 48 से Can I भी. tell you the prime factorization of these? जी बेटे please. So should we do it together, Abresh, like all the three numbers? Okay, ma'am. All right, so 40 जी can बेटे, with which number I can can all divisible on 2. 2. So what would be the answer? 20, 20 24 and 30. and 30. Okay, so Again with 2. I can still divide with 2. So 10, 12 12 and 15. and 15. So now what? Now what? Can we still divide? Now This is with the 3. special case now with 3. That's right. Even if the two numbers are divisible, we will keep dividing. Ma'am, Keep dividing. 3 4s are 12 and 3 and 5s are 5 15. Now what? 5. 5 से भी हो सकता है, yes. 5 2s are 10. ये 4 ही रहेगा. 5 1s are 5. Now what? With 2. Yes. I can divide it with 2. So this is 1 2 1. So now this is the non-common factor, और ये सारे आपके क्या बन जाएंगे? Common factor. ठीक है? So LCM is common factor into non-common factor. आपके common factors हैं 2 3 times, then 3 and 5. ये आपके common factors हैं, और non-common factor is only 2. So if you multiply them all, this is 8 and 8 3s are 24. 24 into 5 is 22. 12 120 and 120 into 2 is 240. Yes. ठीक है? This is 240, right? I hope there is no problem.
Mohit, is it the answer? LCM of 40, 48 and 60. So 240, 48 से divisible है ना? 240 is divisible by 40, yes, we can see. But is it divisible by 48? एक बार चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं की. 10, 12, 15. Then 3 4s are 12, 3 5s are 15. 5 2s are 10, 1 और 2 2s are 4. ठीक है. और यहाँ पर जब हमने लिखा 3 2s थे, 3 and 5, and then 2 is the non-common factor. Ma'am, now Multiply we have to divide 9,999 because that is the greatest 4-digit number. What? That we will find out the multiple of this number ना. ये LCM है ना, हमें वो number मिल गया. Now we will find out the multiples of 240, but I am just taking it कि इसमें कोई mistake तो नहीं है. 15 15 2s are 30. 30 into 4 is 120. ठीक है, that's fine. ठीक है, so LCM is 240. अब देखिए, अब this word will be used, the greatest 4-digit number. LCM is 240. इसका मतलब है we need to find out the multiple of 240. 240 वो सबसे छोटा number है जो इन तीनों को divide, तीनों से divisible है. अब 240 के जितने multiples होंगे ना, they are all divisible. So हमने वो multiple निकालना है, which is the biggest 4-digit number. ये तो 3-digit number है. So we will write down all the multiples. What is the first multiple of 240? It is 240 itself. Second multiple क्या होगा बेटे? It would be 480. Is this point clear कि हम क्यों multiples निकाल रहे हैं? Is it clear? ठीक है, हमने वो सबसे बड़ा 4-digit number लिखना है. So Abrish is saying कि 9999 तो इसका multiple नहीं है. इसका multiple निकालने के लिए अगर हम इसको 10 से multiply करें तो it would be, इस तरह तो बहुत टाइम लग जाएगा, हम इसको multiply करके देख लेते हैं. Like the 10th multiple of this number is 10th multiple इसका क्या होगा? Let me use the whiteboard. 240 हमारे पास आ गया ना, इसके multiples हमें ढूंढने होंगे. अब्रिश आपने मुझे क्या कहा था, क्या करें? Ma'am, divide with 9,999. तो वो तो fully divisible नहीं है ना. We need to find out the closest number. So we can take the multiples. We can take the multiples, but if we will start the multiples from 1, it will take, we can do that. We can multiply it with 10. It is 2400. ठीक है, हमने biggest या largest 4-digit number ढूंढना है जो इसका multiple हो. Largest 4-digit number. ठीक है, so this is very smaller. So what if we multiply it with 50? So like estimate करना है ना, what is, so what will this be? 24 into 5, 22. ये तो ज्यादा हो जाता है. ठीक है, ये 5 digit 12,000 आ जाता है. That's not. 30 से अगर multiply करें तो this is 4 3s are 12. Ma'am, I think with 20, 4,800. So we need to find out the number which is, you know, something like 9 जैसे आप कह रही है ना. This is the last number. So हमने इसके कोई करीब number ढूंढना है which is a multiple of this. So I think so 24 के अगर table में देखें तो 24 into 4 is what? अगर आप इसको 40 से multiply करें तो क्या आएगा? 16, 4 2s are 8, 9, 9600 आता है. So अगर 42 से multiply करें तो क्या आता है? 24 into 4 equals to 96. That we have written now, but we need to find this is the biggest 4-digit number, 9999. So इससे आगे भी तो जा सकते हैं ना. Bigger. It would be 10,080. If you multiply with 42, तो it would be 10,080. 10,080. So what if you multiply it with 41? Ma'am, that is 9,840. 840. So this is your answer. If you multiply it with 42, so that is 10,080. So if you multiply it with 41, so that is, so 9,840 is the largest. Okay, so it is the largest 4-digit number which can divide. 4-digit number which can divide. किस-किसको divide कर सकता है? 40, 60 and 48, I believe. Yes. 48. 40, 60 and 48. ठीक है बेटे. So why we have figured out LCM first? Because हमने सबसे पहले वो सबसे छोटा number निकाला है. LCM is the least multiple of these 3 numbers. ठीक है. And then because the requirement was finding the 4-digit number, so हमने उसके multiples ढूंढे हैं. Whichever multiple was the closest to the biggest 4-digit number, that is your answer. Is it making sense or not? These are difficult questions. और usually classroom में हम ये questions नहीं कराते because ये paper में question नहीं आते. ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चंस ना, लेकिन आपने इवेंचुअली ये क्वेश्चंस आप दोबारा नहीं करने. फैक्टर्स और मल्टीपल्स विल नॉट बी देयर इन ग्रेड 8. ठीक है,
So ये I think so the last time you are doing these questions, और ये tricky questions हैं, ये मतलब इसमें हर एक question में you need to think. अच्छा, next question is HCF of two numbers is 6. If one number is 42, we need to find out the other number. So इस तरह के question हमने उस दिन किए थे book में से. So one number is HCF is 6, so we can write down HCF as 2 cross 3. ठीक है, so one number, so we can write down one number is 42. तो 42 की prime factorization अगर करें तो क्या आता है आपके पास? 42 की prime factorization is 221 then 37. ठीक है, so one number is 2 cross 3 cross 7. So what would be the second number? What would be the second number? So how can we find out the second number? ये हमने उस दिन ऐसे क्वेश्चन किए थे ना, आपको याद है कैसे निकालते हैं सेकंड नंबर? देखिए इफ HCF is 2 cross 3, तो इसका मतलब है ये कॉमन फैक्टर्स हैं. तो सबसे पहले तो आप इसका मतलब है द सेकंड नंबर शुड कंटेन 2 cross 3. तभी तो कॉमन फैक्टर बना है ना, क्योंकि दोनों में आ रहा था. ठीक है ना, द सेकंड नंबर जो सबसे छोटा सेकंड नंबर है वो है 6. ठीक है, 6 इज द स्मॉलेस्ट. यहाँ पर उन्होंने कहा नहीं है फाइंड द अदर नंबर, ऐसे लिखा हुआ है. तो 6 इज द फर्स्ट नंबर व्हिच कैन बी द सेकंड नंबर. 6 और 42 का HCF is 6. ठीक है, अगर आपने कोई और नंबर्स निकालने हैं तो यू कैन जस्ट कीप फाइंडिंग द मल्टीपल्स. ठीक है, अगर आप कहें यहाँ पर 2 और है तो इसका मतलब है 12 इज आल्सो अ सिमिलर नंबर. 12 और 42 का HCF भी 6 आता है. ठीक है, सो देन यू कैन से अगर यहाँ पर आप 4 लिखते हैं तो 6 4 आर 24. 24 और 42 का HCF भी 6 ही आता है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो बिकॉज बुक के जो क्वेश्चन थे ना उसमें दे आर asking you to find out the smallest number, so you were able to answer only one number. लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये नहीं कहा कि second number is smaller than, remember हमने उसने last day question किए थे जब हमने कहा था, उन्होंने आपको कहा था कि दूसरा नंबर ढूंढे which should be smaller than 20 or bigger than 20 or a multiple of this number. Remember those questions? याद है आप दोनों को? Yes. तो यहाँ पर उन्होंने हमें कोई कंडीशन नहीं दी, उन्होंने सिर्फ कहा फाइंड द अदर नंबर. यानी HCF is 6 and one number is 42. You need to find out the second number. So that second number is 6. It can be 6, it can be 12, it can be 24. इन सब का अगर आप 42 के साथ HCF लें तो आंसर आपका 6 ही आता है, राइट? सो क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं आपको कहा कि ये नंबर. Possible answers. That's right. These are the possible answers, and there are many possible answers in this question because there is no restriction. So these are the, we can call them like 6, 12, 18, 24, 13, 36. That's right. अभी तो I'm just multiplying with 2. If I multiply, if अगर मैं यहाँ पे second number में यहाँ पे 3 add कर दूँ, that's how 18 is coming. 3 3s are 9, 9 2s are 18. समझ आ रही है? So we can add any number except for 7. We cannot add 7 because अगर हम 7 add करेंगे तो that will change the HCF. We can add 5 also. अगर मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूं सेकंड नंबर में तो ये 6 5 are 30 आ जाएगा. 30 is also such possible number. अगर आप 30 और 42 का HCF लें तो that is also 6. ठीक है, so there are many unlimited possible answers to this question. ठीक है, many answers can come. ठीक है बेटा, I hope this is clear. मोहित, आपको ये बात समझ आई है? Yes, ma'am. So Mohit, why 7 cannot be the answer? 7 cannot come in the second number. यहाँ पर why I cannot write 7? Why I cannot write 7 here? यहाँ पर मोहित, why I cannot write 7 here? Second number में यहाँ 2 और 3 लिखा है ना, why I cannot write 7? Why we cannot write 7 in the second number? Abrish, can you tell me why not? Then it will change the HCF. Very good. It will change the HCF. ये 7 अगर यहाँ लिखेंगे तो this 7 and 7 will become another common factor. So HCF change हो जाएगा. मोहित, आपका ध्यान नहीं है बेटे. ठीक है, 7 cannot be written in the second number because that will change the HCF. 7 के अलावा आप कुछ भी नंबर लिख सकते हैं. You can write down 2, you can write down 3 or 5 or 11 or 13. So that's why I was saying there are unlimited answer. और आप देखो 2 you can write down multiple times also. You can write down 2 one time, you can write down 2 3 times or 11 times, or so there are possible answers. These are some possible answers, but actually there are unlimited answers to this question. ठीक है, so this is an open-ended question. So now moving on to the next question. Find the least. अब ये बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है जैसे अभी हमने एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन किया है. Find the least number of square tiles by which the floor of the room of dimensions 16 meter. So you have a room जिसकी dimensions हैं 16 into 8. You need to find out how many tiles can cover this floor completely. So first of all, हमने जो भी टाइल है उसका हमने डायमेंशन निकालना है. ठीक है, उस स्क्वायर टाइल्स की लेंथ निकालनी है. LCM.
LCM LCM लेंगे तो दैट विल बी अ बिगर नंबर। ये रूम है, इसके अंदर हमने टाइल्स लगानी है, हमने इसके अंदर टाइल लगानी है। HCF HCF होगा ना बेटे, इट वुड बी अ स्मॉलर नंबर। आप ऐसे तो नहीं कह सकते आपने 8 into 16 के रूम में टाइल लगानी है, तो डायमेंशन ऑफ टाइल इज फॉर एग्जांपल 24 meters, so this is not making sense. ठीक है, so you will find out HCF of 8 and 16, or this is very easy. What is HCF of 8 and 16? HCF of 8 and 16 क्या होगा? HCF of 8 and 16, ये तो बहुत ही कॉमन सा HCF है। 8, ठीक है, इसका मतलब है you need to use a square of 8 centimeter length, 8 meter लेंथ। ठीक है, सो इससे छोटा स्क्वायर अगर आप बनाएंगे ना, अगर आप लेट्स से 4 मीटर का स्क्वायर लेते हैं, तो फिर आप इसको कंप्लीटली कवर नहीं कर सकते। ठीक है, सो नाउ हाउ मेनी, अब देखो अंडरस्टूड है कि अगर 8 मीटर की स्क्वायर की आपने टाइल लगानी है, सो आपके पास 2 ही टाइल्स लगेंगी डेफिनेटली, एक इधर लग जाएगी एक इधर लग जाएगी, बट वी नीड टू प्रूव इट मैथमेटिकली। सो वी विल फाइंड आउट टोटल एरिया ऑफ रूम। ये बिल्कुल वही मेथड है जो हमने अभी पीछे यूज किया। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ रूम? So it's a rectangle, so how to calculate the total area? 16 multiplied by 8, right? Length into width. What is 16 into 8? 128. 128 meter square. Now the area of square tile है ना? So we know that one side is 8, so it is 8 into 8, 64 meter square. Okay, वैसे it is understood. So now number of tiles required. So number of tiles would be the total area divided by the area of that tile. So there are 2 tiles which are required. ठीक है, अब आपके ज़हन में ये ख्याल आ सकता है कि why such a big tile we are using? 8 meter by 8 meter वाली टाइल तो बहुत बड़ी सी टाइल होगी. So why we are using such a big tile? Because the requirement of the question is that हमने इस तरह टाइल लगानी है कि उस रूम में कुछ जगह खाली ना रहे. ठीक है, so this is इस डायमेंशन में और कोई ऑप्शन ही नहीं है. यानी देखें ना, अगर हम छोटी टाइल लगा लेते, फॉर एग्जांपल ये आपके पास 16 मीटर इंटू 8 मीटर है, ये बात समझनी है आपने कि वाई देयर आर 2 टाइल्स. अगर मैं 4 सेंटीमीटर की या लेट्स से अगर मैं 3 मीटर की टाइल्स लगाती, 3 मीटर बाय 3 मीटर, देखिए यहाँ पर मेरे पास आता 3 6, सो 2 मीटर बच जाता. ठीक है, और यहाँ पर भी 3 3 6 9 और 3 4 12, 3 5 15. तो यहाँ पर कितनी टाइल्स लग रही हैं? 1 2 3 4 5, और यहाँ पर 1 मीटर बच जाता. जैसे यूजुअली आपने फ्लोर्स में देखा है कभी, आपने अपने घर पे या आपने फ्लोर्स में या अपने शहर में कभी ध्यान किया है कि अक्सर हमारे पास क्या होता है कि हम जब टाइल्स लगा लेते हैं तो हमारे पास ये एक्स्ट्रा स्पेस बच गई है ना, तो फिर इसमें क्या करते हैं हम लोग, हम अक्सर टाइल्स कट करके लगाते हैं, विच इज नॉट अ गुड वे. ऐसा ही होता है ना, हम क्या करते हैं फिर हम इन टाइल्स को कट करते हैं, यहाँ से 2 मीटर की ये जगह बच जाएगी, यहाँ पर 1 मीटर की जगह बच जाएगी, तो फिर हम उस टाइल्स को कट कट करके लगा देते हैं, हमारे पास मजदूर. लेकिन दिस इज नॉट अ गुड वे ना. तो दीज क्वेश्चंस आर व्हेन यू आर बेसिकली यू वांट टू यूटिलाइज द स्पेस कंप्लीटली. आपने किस साइज की टाइल बनवानी है कि आपको काट के टाइल ना डालनी पड़े, तो दैट नंबर इज 8 मीटर. अगर आप 8 मीटर बाय 8 मीटर की स्क्वायर टाइल्स यूज करें तो यू नीड 2 टाइल्स टू कवर द फ्लोर ऑफ दैट रूम कंप्लीटली. ठीक है बेटे, इज इट मेकिंग सेंस? इज द क्वेश्चन क्लियर? Yes, ma'am. रिक्वायर्ड. ठीक है, सो मुहीद आपको भी समझ आ रही है? Yes. All right, so these were the questions we have already done. ठीक है, so now let's solve questions of the second worksheet. So second worksheet के ये questions हैं, ये भी questions हम almost कर चुके हैं, but we will go through these questions one by one. इसका first question I have given you as a home task, so we will start with question number 2. ठीक है, so question number 2 is, please pay attention, express the as the product of prime factors. 192 की prime factorization है और 18 की prime factorization है, so we need to find out दोनों केसेस में. फर्स्ट केस में हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है such that 198k is a perfect square. So what do you think would be? जी जी, तो मुझे इन दोनों के सवाल में कंफ्यूजन आती है, जैसे ये पार्ट नंबर ए वाला है. क्या कंफ्यूजन है बेटे? क्या कंफ्यूजन है मोहित? क्योंकि अब्रिश को तो ये चीज क्लियर है. अब्रिश विल जस्ट आंसर. देखो इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने कहा है 198 इज वन नंबर. 198 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमें पहले ही पता है. देखो 198 से छोटा स्क्वायर नंबर क्या है हमारे पास? लेट्स से 12 का स्क्वायर इज 144. ठीक है, 13 का स्क्वायर इज 169 एंड देन 14 स्क्वायर इज 196. ठीक है, 15 स्क्वायर इज 225. अब देखो 198 इधर आ रहा है कहीं पे, 198
198 is not a perfect square. ठीक है, नहीं है ना perfect square. So they are asking us कि 198 में क्या ऐड करें, क्या चीज इसमें मल्टीप्लाई करें, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करें, k is unknown, किससे मल्टीप्लाई करें कि 198 परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. ठीक है, तो इसका क्या तरीका होता है इन क्वेश्चंस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये पेपर में लाजमी आते हैं. इसका मेथड ये होता है कि आपने जो नंबर आपको दिया जाता है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है और फिर आपने देखना होता है कि क्या मिसिंग है, क्या चीज ऐड हो तो k परफेक्ट, k क्या होना चाहिए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. यानी 198 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. अब देखिए अब्रिश, व्हाट डू यू थिंक, क्या मिसिंग पावर्स हैं इसमें? 2 की पावर 1 है और 11 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है. सो व्हाट आर द मिसिंग पावर्स स्क्वायर बनाना है? Now 2 has the power of 1 and 11 has the power of 1. So the answer is 22. मोहित, आप ये क्यों हमने किया है, हमने क्यों 2 की 1 पावर ली है और 11 की भी 1 पावर ली है? ये सबसे छोटा नंबर है जिसके साथ 198 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 198 into k will become a perfect square. ये कैसे हमें पता चलता है? हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उस नंबर की, और चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं जिसमें सारी पावर्स 2 हो. ठीक है, पावर्स ऑफ 2 होना चाहिए ना, स्क्वायर नंबर में पावर ऑफ 2 होता है. तो यहाँ पर हमने देखा है कि इसमें 3 की तो पावर 2 है, दैट्स फाइन, लेकिन 11 और 2 की पावर 1 है, तो एक एक पावर हम उसको और देते हैं. तो 22 के साथ अगर 198 को मल्टीप्लाई करें तो दैट आंसर वुड बी अ स्क्वायर नंबर. ठीक है, सो नाउ कम्स द सेकंड पार्ट, 18 के. 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन वी ऑलरेडी नो, इट्स 2 into 3 स्क्वायर. लेकिन अब हमने बनाना है परफेक्ट क्यूब. मोहित, परफेक्ट क्यूब कैसे बनाएंगे? परफेक्ट क्यूब कैसे बनाते हैं? ऑल पावर्स ऑफ 3, सारे नंबर्स की 3 पावर होनी चाहिए. तो मोहित अब आप मुझे बताएं. जी बेटे. So 2 will have the power of 2. 2 will have power of 2 and 3 will have power of of 1. ठीक है, so 2 2s are 4, 4 3s are 12. इसका मतलब है अगर आप 18 को 12 से मल्टीप्लाई करें so 18k would be a perfect cube. मोहित, ये दोनों बातें समझ आई हैं बेटे? ये सारी बाकी क्वेश्चंस इसी तरह. ठीक है, आपने मिसिंग पावर्स निकालनी होती. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, 108 को लिखना है एज अ प्राइम फैक्टर्स एंड इन द इंडेक्स नोटेशन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 108. सो विद व्हिच नंबर वी कैन डिवाइड? किससे डिवाइड करूं, किस प्राइम नंबर से? विद 2. 54 देन अगेन विद 2 क्या आएगा? 27. 27. Then 3. Then again with 3. 3 9s are. Then again with Then again 3. And then 3. ठीक है, so अब देखिए what is index notation? What is index notation? Writing in form of in square and the cube form. That's right. या हम इनको मैथ्स में कहते हैं पावर फॉर्म. इंडेक्स आर पावर फॉर्म. ठीक है, सो हम लिख सकते हैं 108 is equal to, so 2 की कितनी पावर है? 2 square into 3 cube. 3 cube. So this is the index notation. ठीक है, right. So now the next question is, अच्छा, यूज दीज रिजल्ट्स. अब वो जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, अब यहाँ पर k की जगह पर n इज यूज्ड बट द मेथड इज सेम. द स्मॉलेस्ट इंटीजर n such that 108 n is a perfect cube. So 108 को अभी हमने निकाला है, 108 is 2 square into 3 cube. So we need to find the value of n ताकि ये perfect cube बन जाए. So 2 is equal to 2 is equal 1 power and the answer 3 की power is already cube. So this is fine. So यहाँ पर 2 की एक. That's right. So the answer is equal to 2. That is right. N is 2. ठीक है, so now the next question is find the smallest integer n such that 168 n is a perfect square. अब 168 की प्राइम फैक्टराइजेशन उन्होंने हमें पहले क्वेश्चन में करके दी हुई है. दिस इज 3 into 2 cube into 7. हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. मोहित, अब आपकी तरफ से मुझे आंसर चाहिए. हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो परफेक्ट स्क्वायर में तो पावर 2 होनी चाहिए. n is equal power 3 की पावर 3 power 2. 1. 3 की पावर 1 ना. 2 is right. So now 7 with the power of 2. नहीं बेटे, हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है. अब्रिश, स्क्वायर बनाना है. 3 की पावर 1 आएगी, 2 की कितनी पावर आएगी? Ma'am, it's already correct. No, it's not ना. It should be Ma'am, square 2 with the number. power of 1. 1 आएगी ताकि टोटल पावर 4 हो जाए. और 7 की पावर कितनी आएगी? 7 should also be having 1 power. So this is the value of n. 3 2s are 6, 6 7s are 42. N should be 42, so that 168 multiplied by 42 will become a prime a perfect square. ठीक है,